So our topic is TDS. Now, this topic importance is nowadays each and everywhere, wherever we have income, wherever we have payments, receipts, payments, everywhere there is nowadays concept of TDS and TCS. Now, whenever we use the word TDS, one more word TCS also comes in our picture or comes in our mind. So TDS and TCS. TDS is tax deducted at source and this is tax collected at source. Tax collected at source and TDS is tax deducted at source. First, what is the basic difference between TDS and TCS? Suppose amount 1 lakh, okay, less 10%. Say for example, TDS 10,000. So net payment 90,000. For example, your bank interest is 1 lakh. What bank will do? Deduct 10% TDS, 10,000, balance 90,000. So they will pay you balance 90,000. They will pay you balance 90,000. So in TDS, they deduct and give you balance. And this will be going to income tax. What they will do? This will go to income tax. And if you are saying why you have deducted, I need this 10,000, my income is not taxable, whatever, then they will say submit return and claim from income tax department. Income tax department will say submit return and claim. We will check. If it is okay, we will refund you. Now, TDS and TCS, what happens? Suppose, direct example, wine shop. Clear? Wine shop. Purchase goods. Say 10 lakh rupees. Add TCS 1%. 10,000 rupees. So 10 lakh, 10,000. So net payment to be made. A net payment received. So TDS, when you receive, they deduct and pay you. TCS, you have to pay more. You have to pay. Another example of TCS. Suppose you have purchased a car. One car purchased value more than 10 lakh rupees. Say car value is 20 lakh rupees. 20 lakh rupees. This 20 lakh rupees, if you go to buy the car, they will say pay 20 lakh 20,000. 20 lakh 20,000 extra they will collect. 20,000 extra they will collect. That 20,000 you can claim shut off. That 20,000 you can claim shut off. TCS. So number of places they have considered TCS. Number of places there is concept of TDS. Clear? Now again. So first word comes, who are not liable to deduct TDS, are
not covered by TDS. Who are not covered by TDS? So we are saying individual HUF. This is including sole proprietor firm. Okay. So they are not supposed to deduct TDS. Clear? Mainly our discussion will be TDS. Clear? Separately we'll discuss TCS where TCS is applicable. So big list is there mainly for TDS. Again some places covered for TCS. So who are not covered? Individual including sole proprietor firm HUF. Okay. Now if not covered by tax audit. Clear? If you are not covered by tax audit, then only you will get this benefit. If you are covered by tax audit, then this benefit is not available to you. Clear? If not covered by tax audit, then you are eligible. Clear? But if tax audit, then you also have to deduct TDS. Clear? Now again. So TDS, big list is there. We are considering one by one. Okay. So write down again TDS. We'll write down section, we'll write down head, each head section is there and how it is applicable. So section 192. Salary. So TDS on salary. Now what is TDS on salary? Understand the concept. Salary, suppose your salary is, say, salary, say make it 10 lakh. Okay. Finally, income from salary. So tax on total income 10 lakh. How much coming? 1 lakh plus 12,500. 1,12,500. 1,12,500 at HEC at the rate of 4%. How much coming? 1,12,500, 4%. 4,500. How much coming total? 1,17,000. Right? So average 1,17,000 by 12. How much rupees? 1,17,000 by 12. 9,750. So we will say
TDS per month rupees 9750. TDS per month rupees 9750. Okay. So TDS per month rupees 9750. Okay. ठीक है. So whenever they will give you salary, they will minus 9750 and pay to you, and 9750 they will deposit with income tax department. Okay. Now, if your salary is over oblique total income 4,80,000, okay, then what happens? Tax on TI 2,50,000 is nil. Above 2,50,000 means 2,30,000 into 5%. 1,150. Now how much? 11,500. Less under section 87A. So what happens? Nil. So we will say no TDS. We will say no TDS. So TDS on salary, if tax coming, divide by 12, and while paying the monthly salary, deduct and pay. Clear? And whatever TDS deducted, that should be paid to the income tax department. That should be paid to the income tax department. I think meaning is clear, very clear. Okay. So salary, total income 4,80,000, tax on TI. Okay. So TDS on salary, meaning clear? So salary system, they don't have any specific rate. We have to calculate how much tax coming, and on that basis divide by 12. Okay. So write down next. So 192 was salary. Next write down section 192A. Now, write down recognized provident fund. Recognized provident fund balance exceeding rupees 50,000. Okay. Or equal to rupees 50,000. Okay. Exceeding or equal to rupees 50,000. If exceeding, then only, otherwise no need. Okay. Here meaning, suppose you are retiring
or you want to withdraw your provident fund balance. Clear? So when you will withdraw, and here interesting is that whether it is recognized or unrecognized, even if it is recognized, then also your minimum contribution should be at least 5 years. Minimum contribution to provident fund should be at least, if you want to withdraw, and you are not coming under exemption, in that case they will deduct TDS. वो लोग TDS काट लेगा. So some conditions are there. They deduct TDS. Again, so it is the duty to deduct TDS. Again, number of times, unrecognized provident fund. Unrecognized. So unrecognized, no meaning. Whenever payment is there, they have to deduct TDS. It is just like salary. ठीक है? Again, next write down. So section 192 is salary. 192A provident fund balance. Again, 193 interest on securities. Interest on securities. Okay. So interest on securities other than exempted. ओके, अगर एग्जेम्प्टेड है तब तो नहीं काटना है, एग्जेम्प्टेड नहीं है तो आपको काटना है. तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर देन exempted. Okay, then write down. Same, interest on gold bonds. Interest on gold bonds. More than rupees 10,000. Interest on gold bond more than rupees 10,000. Okay. Interest on bonds. Interest on bonds more than rupees 10,000. Interest on debentures more than rupees 5,000. Interest on debenture more than rupees 5,000. Clear? So interest on securities, interest on gold bond, interest on bonds, interest on debentures,
So more or less these are all securities. Debenture is also securities. But debenture case 5,000. Others 10,000. If it exceeds, they will deduct TDS. Okay? Section important. Next, write down section 194. Now, payment of dividends. Payment of dividends. Okay. A. Resident individuals more than rupees 5,000. B. Others excluding LIC, GIC. Okay. Subsidiaries. Subsidiaries. Business trust. Without any limit. Without any limit. Okay. So regarding LIC, also we can write down other insurance companies. Other insurance companies also. So LIC, earlier actually LIC was getting some importance. Now all insurance company concept is same. You can't say that LIC will get advantage. Okay. So LIC not getting now any advantage. Rules regulation controlled by IRDA, Insurance Regulatory Development Authority. All are same. No extra preference. Okay. IRDA. So all insurance companies, GIC. So whatever one insurance company, others also. So business trust without any limit. It means even 1,000 deduct TDS. Otherwise, dividend payment, they will deduct TDS. Now here important is another interesting thing. Nowadays, in income tax, you will see dividend given, amount given, TDS not deducted, then also information available. What happening nowadays? Government making plan in such a way that each and every place, all India basis, you have to give the information. Suppose your position is bank. So bank FDs are there. Bank FDs are there. Whoever has done FD will get some interest. They are saying whatever interest paid, inform. Whatever interest paid, inform. And if you don't inform, you will be penalized. So what they do, whether TDS deducted, not deducted, they give the information. Nowadays possible because computerized. So all informations are through computerized.
So computerization is there. Okay. Now, the payment of dividend. Resident individuals more than 5,000. Others means if a foreign resident, foreigner, non-resident. Okay. So clear cut written resident individual. So NRI will not be covered. So all others covered by dividend. But insurance companies will not be covered. Okay. So 192 salary. TDS on salary. 192A Provident Fund. 193 interest on securities. 194 dividend. 194 is dividend. 195, sorry, make it 194A. A. Interest other than interest on securities, other than interest on securities, more than rupees 5,000, more than rupees 5,000. Okay, here TDS on FD, TDS on FDs, oblique time deposits, time deposits. Now, more than rupees 40,000 and more than rupees 50,000, this is for senior citizen. Senior citizen. ठीक है? Earlier this amount was 10,000. Earlier this amount was 10,000. Now it is 40,000. Okay. Earlier it was 10,000. Now it is 40,000. Again, further system is declaration. Declaration given to the bank, don't deduct my TDS. They will not deduct. They will not deduct. You have to give declaration that my income is not taxable or overall income is less than this amount, not falling under tax liability. You have to make a declaration. They will not deduct TDS. Otherwise, they will deduct TDS. Clear? Okay. So, this point is clear. So, TDS, bank interest. Now, interest on deposit with post office more than rupees 40,000.
More than rupees. So now TDS has come to post office also. समझे? पहले पोस्ट ऑफिस में TDS नहीं था. 40 crossed, TDS applicable. Okay? 40 crossed, TDS applicable. अब TDS आ गया. ठीक है? Up to last year it was not there, but now TDS on post office also. Okay, but by giving declaration they will not deduct. Now, more write down. Interest on compensation awarded by motor accident claim okay, more than rupees 50,000. More than rupees 50,000. Now here try to understand. Accident insurance claim. The claim is 10 lakh rupees. Now they are delaying in payment. So they paid say 80,000 interest also. So this 80,000 interest TDS attracted. 10 lakh claim plus 80,000 interest. 80,000 interest is eligible. They will deduct TDS. Interest on claim. Claim is different. Interest is different. Interest why? Delay. So if it exceeds 50,000, TDS is attracted. Okay. Again. Zero coupon bonds. Zero coupon bonds. Okay. First question is, what do we mean by zero coupon bond? Any idea, anyone? Zero coupon bond. What it is? कब हम लोग बोलते हैं ये जीरो कूपन बॉन्ड है? अगर आपको कुछ नहीं देगा तो आप इन्वेस्ट करोगे? तो वो बोला अभी आप दो 1 लाख, 10 साल बाद ले लो 2 लाख. आप बोले इंटरेस्ट कितना है? बोला कोई इंटरेस्ट नहीं. क्या आपको बोला अभी 1 लाख दो, बाद में लेना 2 लाख. इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं है. ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो हाउ मच कमिंग, बट दे विल से नो इंटरेस्ट. सिस्टम क्या होगा? 1 लाख का 2 लाख. ठीक है. So when they will pay, that time they will deduct TDS. When they will pay, they will deduct TDS. ठीक है, काट के आपको दे देगा. So again, so zero coupon bonds. So again, 192 salary, 193 interest on securities, 192A provident fund balance, 194 dividend, 194A interest on time deposits. Interest on time deposits. Time deposits, compensation interest, zero coupon bond, post office interest, all coming under 194A.
Then write down $194B winning from lottery, crossword puzzles, card games, or any other more than rupees 10. More than rupees 10,000. So here important is lottery winning more than 10,000. They will deduct TDS. Crossword puzzle, TDS. Okay. Say your winning is 50,000 rupees. So from where you won the lottery, so they are saying will deduct TDS. You are saying don't deduct TDS. I am individual. They will deduct or no? Deduct. They are not individual. Okay? Again, say card games. You are saying my income from card games is this. Okay. Now number of times what happens? Always one word comes legality, illegality. Legal, illegal. Income tax department has no problem with illegal income. They will say pay tax. But suppose you are saying my illegal income is 1 crore rupees. I am ready to pay 30% tax. Income tax department, no problem. But they will inform the same to other department. Got it? Other department will make inquiry. Okay? Time to time, government comes out with schemes. 5 year, 10 year, 20 year, they come out with a scheme. Undisclosed income. Undisclosed, they are saying disclose it. Pay tax. No question answer. Come out with your undisclosed income. Pay tax. No question answer. Okay? Voluntary disclosure income scheme. Voluntary disclosure income scheme. Okay? So time to time, scheme comes, closes also. Okay? So winning from lottery, crossword puzzles, card games, or any other, if it exceeds 10,000, TDS is 194 BB. Winning from horse races more than rupees 10,000. Okay? More than rupees 10,000. So if horse race course we know, race course, bidder, participate, you won more than 10,000, they will deduct TDS. Now what will be the rate TDS? Horse winning 30%. Lottery winning 30%. Okay. So rate of TDS will be high, 30%.
bank interest and this all, it will be 10%. Salary, average TDS based on average. Okay, now so horse case also they will say 30%, 10%. Dividend interest ये सब 10%. वो सब एवरेज में चला जाएगा. ठीक है ना. Next, write down 194C word contractor. Okay. So contractor here overall more than rupees 1 lakh in financial year or each payment more than rupees 30,000. More than rupees 30,000. ठीक है. ओके. कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट आप ऐसे सोचो, उसको 10,000 रुपीज एवरी मंथ देते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को. साल में कितना हो गया? क्रॉस हो गया 1 लाख. टीडीएस. टीडीएस कब होगा? किस मंथ में? 11th month. So first 10 month 10,000 1 lakh only, not exceeding. 11 month में उसको 10,000 देंगे. टीडीएस काटेंगे. कितना काटेंगे 11th month में? 11th month में 1%. कितना काटेंगे? 1%. कॉन्ट्रैक्टर 1%. एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सेम. बोला व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टीडीएस. क्या आंसर देंगे? अमाउंट ऑफ टीडीएस 11 मंथ में 10 मंथ 1 लाख. 11 मंथ एक्सीड 1 लाख. बोला 11th मंथ में हम लोग जब 10,000 का पेमेंट देने जाएंगे, कितना टीडीएस काट के उसको पेमेंट करेंगे? तो पूरा 1,10,000 का 1%. पूरा 1,10,000 का 1%. 1100 will deduct TDS. ठीक है. 1100 TDS and will pay 8,900. 12th मंथ में जब देंगे तो 10,000 का 100 रुपये काट लेंगे. बोलो. 1% हर केस में होगा. हाँ, 1% कॉन्ट्रैक्टर हर केस बोल के कुछ नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्टर, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर है
ठीक है, तो 1%। और अगर प्रोफेशनल सर्विस होगा तो फिर 10% कट जाएगा। प्रोफेशनल सर्विस होने से 10%। कॉन्ट्रैक्टर है, आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो और बोले हम तो कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है मेरा, देखो एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है। बोला नेचर क्या है? नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोफेशनल। बस हो गया, केस बदल जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट में इंटरप्रिटेशन है, लास्ट में इंटरप्रिटेशन है। हियर ऑल्सो you have given for advertisement, what to do? Here also they are saying covered by contractor contract, 1% deduct TDS, आप 1% TDS, ठीक है। again, so if it exceeds overall 1 lakh and each payment, ठीक है। अब केस आ गया इंडिविजुअल का, आप अपना घर बना रहे हो, पॉसिबल, योर ओन हाउस, तो कॉन्ट्रैक्टर को 3 लाख रुपया का पेमेंट करना है। ध्यान से, यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ 3 लाख रुपीज टू कॉन्ट्रैक्टर। TDS attracted or no? आप अपना घर बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए, उसको बोले घर बनाओ, बना रहा है, 3 लाख का क्लेम है, अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बोलो, एग्जाम में कुछ तो लिखना होगा। होगा नहीं होगा? होगा। चलो आप लोग बोलो, श्रावणी। होगा। आपका? करण? होगा। शुभदीप? तौसीफ? नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा। हम लोग शुरू में डिस्कस क्या किए? इंडिविजुअल टैक्स ऑडिट, ऐसा वर्ड यूज किए थे। टैक्स ऑडिट कब होता है? टर्नओवर more than ₹1 crore, turnover more than ₹1 crore, and profession में more than ₹50 lakhs, more than ₹50 lakhs, ठीक है। यहाँ पर केस कितना है? सिर्फ 3 लाख का है, तो आप तो 3 ही लाख दे रहे हो, तो आपका टर्नओवर क्या 1 करोड़ से ज्यादा है? नहीं। क्लियर? अब ये 1 करोड़ 50 लाख याद कैसे रखना है? तो बस याद रखिए, टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का सिस्टम है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट अट्रैक्टेड है, लेकिन आप अगर अपना इनकम 8% 6% से ज्यादा डिक्लेयर करो, केस टू केस,
बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो 6%, अदरवाइज 8%। तो आप 10 करोड़ तक बच सकते हो, बट स्टार्ट हो जाता है 1 करोड़ से। पहले वो लिमिट था 5 करोड़ पर, उसको बढ़ा के और कर दिया, बोला 10 करोड़, बट डिक्लेयर योर इनकम 8%। डिक्लेयर योर इनकम 8%। अगर आप डिक्लेयर कर दो तो छोड़ देगा, कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। अगेन, इंडिविजुअल, ठीक है, तो टैक्स ऑडिट टर्नओवर, ओके, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। तो रेट 1%, ओके। नेक्स्ट 194D, commission to insurance agents more than ₹15,000। अगर 15,000 से ज्यादा इंश्योरेंस कमीशन है तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नो। मोर देन 15,000 डिडक्ट टीडीएस, अदरवाइज डोंट डिडक्ट टीडीएस। ठीक है, क्लियर। अगेन 194DA, पेमेंट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ध्यान से, यहां पे LIC नहीं बोल रहा है, एनी इंश्योरेंस कंपनी, ओके। मोर देन ₹1 लाख, if not exempt, if not, मीनिंग क्या है, इसको ध्यान से इसको समझ लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी में nowadays one system is that premium should not exceed 10% of the policy amount। ठीक है, अगर आपका प्रीमियम पॉलिसी अमाउंट से 10% से ज्यादा है तो फर्स्ट तो क्या है, आपको ATC में प्रॉब्लम आएगा, पूरा नहीं मिलेगा। सेकेंड, ऑन मैच्योरिटी दिस अमाउंट दे विल डिडक्ट TDS। कौन TDS काटेगा? इंश्योरेंस कंपनी, ओके। नाउ इंटरेस्टिंग इज, ड्यू टू दिस ऑल, nowadays इंश्योरेंस कंपनी इज चार्जिंग प्रीमियम विद इन 10%। फिर से, बीच में क्या हुआ था, आपको इंश्योरेंस कंपनी बोला 3 साल आप पैसा दो बस, कितना, 3 years, and they made investment scheme instead of insurance scheme। इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है। 3 साल बोला प्रीमियम दो, आप टैक्स बेनिफिट क्लेम करो, बोला पॉलिसी अमाउंट कितना का है,
बोला 5 लाख का। प्रीमियम कितना है? बोला 1.5 लाख। 3 साल आप 1.5 लाख पेमेंट किए, एटीसी में क्लेम किए टैक्स बेनिफिट। 3 साल के बाद बोला आपको 5 लाख, आपको हम लोग और 1 लाख दे देंगे, 6 लाख। समझ गए? एंड एग्जेम्प्ट, जो पैसा मिला सब एग्जेम्प्ट, इधर डिडक्शन भी मिल गया, इधर एग्जेम्पशन भी मिल गया। व्हाट माय पॉइंट? नाउ गवर्नमेंट सेड व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है? ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, लाइफ रिस्क, रिस्क फैक्टर, this they are making investment scheme. Then they impose restriction that premium should not be more than 10%. If 5 lakh, maximum 50,000. ठीक है? Anyway, what system we are saying now impose? 20 years before this was the system. Then what happens again, to promote insurance company, they said restriction withdrawn. They started, then again beyond limit they are going, then again restriction imposed. So what they did now, this is not new, in old it was also there. ठीक है, पहले भी था, फिर उठा दिया था, फिर से किया। Anyway, so 194 DA, payment under life insurance. Okay, so payment under life insurance policy, insurance company paying, they will deduct TDS. हाँ, फिर से, if premium is more than 10%, then it is not going under exemption. If premium within 10%, then it is under exemption. ठीक है, within 10%, then it is exemption. TDS again, even if TDS deducted, it is not a tax. They are submit return, claim refund. Submit return, claim refund. ठीक है, submit return, claim refund. Then nothing, fully exempt. Whatever received, deposit in bank. Oh. Even if the amount at maturity is more than 1 lakh. Let be 1 crore, no problem. Premium within 10% maturity exempt. ठीक है, कोई टैक्स कुछ नहीं। ठीक है, जहां पे प्रीमियम ज्यादा है वहां पर फिर से ये एक डेट दिया, उस डेट से लागू होगा। ठीक है ना, उसके पहले ये भी सब माफ था। ओके, नाउ 194E, payment to non-resident sportsmen oblique athlete oblique entertainer or non-resident sports association, non-resident sports association. Okay, now ध्यान से,
from foreign country, some sports person coming into India, playing, say cricket, others, foreigner. So you can make direct payment to them, or they are coming through sports association outside India. They are sending. इसको कैसे समझना है फिर से? जैसे मान लो India's cricket association is there. So whoever players in association, if they want to play from any other place, first they have to obtain permission from them. Possible? Again, same thing may happen to outside India. They are players. Then payment either you are making to the sports person or sports association. Possible? Deduct TDS. Deduct TDS. Okay? Another. If entertainer coming, athlete coming from outside India to India, we are ultimate making payment, deduct TDS. Entertainer means some musical program, foreigner, some came to India, did some musical program. These are popular in Mumbai, Bangalore, Pune. Okay. So, there what happens? You are making payment to them. You have to deduct TDS. Clear? Again. Now, before moving into further, first, once again, ready? Now, regarding Provident Fund balance, आपका पैसा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी है. नॉर्मली इट इज एग्जेम्प्ट. जब आपको मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 5 साल होना जरूरी है. हाउ मेनी इयर्स? अगर 5 साल के पहले आप पैसा उठाते हो, ठीक है, और 50,000 से ज्यादा अगर पैसा है, तो आपका टीडीएस काटेगा. टीडीएस काट लेगा, उसके बाद आप जाके क्लेम कर लो फिर से. चलो शॉर्ट में अभी जस्ट हम लोग जो किए सेक्शन 192 इज सैलरी, 192A प्रोविडेंट फंड बैलेंस, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 dividend, 194A time deposits, interest, compensation, interest compensation. ठीक है. वन 194B, this is lottery, card games. 194BB, horse races. 194C, contractors. 194D,
insurance agents, $194 DA, $194 DA. No, payment लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, एक्सेप्ट एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट है तो नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। अब वो क्या है, 10% वाला चक्कर है। 194E, इसको कैसे याद रखना है, E फॉर इंटरटेनर, फॉरेन स्पॉट्स, और ये सब फॉरेनर है, फॉरेन इंटरटेनर, फॉरेन स्पोर्ट्स पर्सन, फॉरेन एसोसिएशन, ठीक है, फॉरेन एथलेट कमिंग इनटू इंडिया, ठीक है। ई फॉर इंटरटेनर याद रखिएगा। अप टू दिस वी हैव डन, यहीं तक हुआ है। चलिए फर्दर एडिशन, फर्स्ट वी आर familiar with all the sections, then we'll go into more detail, then we'll go into each and everything rates, then we'll go into filing, TDS deposit, payment dates, filing, then different thing, not done what will happen, wrong done what will happen, less done what will happen, forgot not done what will happen, penalty, fine, what happens to TCS, okay, all will discuss. बोलो। सर नेट डायबिटीज से ज्यादा हो सकता है टीडीएस, फिर बोलो। टीडीएस नेट नेट डायबिटीज से ज्यादा हो सकता है। आप कहना क्या चाह रहे हो ये बोलो। सर हम लोगों को जो नेट डायबिटीज आया है, जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट एक आया तो हम लोग को टीडीएस पे उससे ज्यादा। फिर हम क्या बोले, आप क्या कहना चाह रहे हो उसको सेट बोला। आपका कहना है कि इनकम है 10 रुपया, टीडीएस है 20 रुपया, ये कहना चाह रहे हो, तो क्या करना चाह रहे हो। टीडीएस में 10 रुपया है तो मतलब टीडीएस पे 15 हो सकता है टैक्स लायबिलिटी। हमेशा हो सकता है, वही होता है। रिफंड कब होता है, रिफंड कब होता है, जब हम लोग का टीडीएस ज्यादा काट लिया। हम लोग का टीडीएस काट लिया 5 लाख, हम लोग का टैक्स है 4 लाख, क्या करेंगे, 1 लाख रिफंड। ये तो कॉमन फीचर है, दिस इज वेरी कॉमन। मैंने अभी जो रिटर्न का सिस्टम है, करंट सिचुएशन, इसको ध्यान से, सपोज पहले 100 रिटर्न जमा होता था ना, तो 80 में हम लोग को टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, 20 में रिफंड होता था। अभी 100 में 80 में रिफंड है, 20 में ही टैक्स पेमेंट है, समझ गए। अभी मैक्सिमम में टीडीएस ज्यादा ही है, सबका टैक्स से ज्यादा है। चलो फिर से वापस, so we have done up to 80E. Next 194EE. No, payment under NSS more than rupees 2500. नाउ नेशनल सेविंग्स स्कीम, ये था 1987 एक, ठीक है। इसमें अगर 2500 से ज्यादा का पेमेंट है तो आपको टीडीएस कटेगा। अब वेरी रेयर कुछ पेंडिंग केसेस ही है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 194F, रीपरचेज अंडर
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑफ अंडर सेक्शन 80 CCB। नाउ ध्यान से, अभी जो आप लोग का 80C है, अभी 80C है ना, पहले इसमें 80 CCB करके एक सेक्शन था पहले, और उसमें इन्वेस्टमेंट का था, स्कोप था, आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन जब पैसा मिलेगा उस समय टैक्सेबल होगा। ठीक है, जब आप दोगे तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन जब आपको मिलेगा उस समय टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बेनिफिट वाज क्लेम्ड अंडर 80 CCB। फिर से आप 80 CCB का बेनिफिट क्लेम किए जब वो मैच्योरिटी अमाउंट मिला। रीपर्चेज, रीपर्चेज का मतलब जिससे आप परचेज किए थे वही आपसे फिर परचेज कर लिया। एग्जाम्पल, यू परचेज यूनिट्स ऑफ UTI by paying 2 lakh rupees. After 5, 6, 8, 10 years, they have paid you 4 lakh and repurchase. ठीक है, तो क्या हुआ, ये स्कीम का भी क्या चक्कर है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए टेक्निकली। एक स्कीम लॉन्च किया, वो बोला ये स्कीम 15 साल बाद हम लोग क्लोज कर देंगे। एक स्कीम शुरू होगा, 15 साल बाद उसको क्लोज कर देंगे। आप पैसा लगाए, 15 साल तक वो ग्रो किया, 15 साल के बाद क्या किया, स्कीम क्लोज किया। क्लोज का मतलब जो भी था सब बेच दिया, जो पैसा मिला उसको फिर से बांट दिया। बांटने का मतलब क्या है, उसमें से आपको भी मिला और आपके पास जो यूनिट था वो रीपरचेज कर लिया। तो ऑन रीपरचेज ऑफ यूनिट्स व्हेन यू रिसीव दैट टाइम इट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। मतलब आप जो पैसा उसको दिए वो पैसा को वो इक्विटी में लगा दिया, जो भी बेनिफिट हुआ आदमी फिर दे देगा। दैट इज कंसेप्ट ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक है, अगेन, तो 194F। नेक्स्ट 194G, कमीशन, रेमुनरेशन और प्राइज ऑन लॉटरी टिकट्स more than rupees 15,000। more than rupees। ना इसके मैकेनिक्स को समझिए, टेक्निकलिटी से। टिकट, लॉटरी टिकट सेलर, यू नो, लॉटरी टिकट सेलर, lottery ticket seller when selling the ticket. So someone got first prize, possible? Possible? Suppose that ticket was sold by that person, किसी का तो सेल है, और मे बी नो प्राइज। अब जो लॉटरी टिकट सेल कर रहा है उसको क्या मिलता है, टिकट सेल पे कमीशन प्लस। बहुत लोग को बोला सेल में कमीशन मिलेगा, तो बोला नहीं बिकेगा तो नो कमीशन। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड, कम से कम कुछ फिक्स्ड दो। पॉसिबल? आप देखोगे बहुत सारा लॉटरी टिकट फिर से शुरू हो गया है, बहुत जगह बीच में कम हो गया था फिर शुरू हो गया है। ठीक है,
वो लोग क्या करता है, बोला ठीक है 2000 रुपया तुमको महीना मिलेगा, टिकट बेचो, इससे ज्यादा बेचोगे तो कमीशन भी मिलेगा। स्कीम बना दिया। तो जितना अनएम्प्लॉयड लोग है फिर से टेबल चेयर लेके बैठ गया, अपना लॉटरी टिकट बेच रहा है। देखे होगे बहुत सा नया शुरू हुआ है, ये सब उसी कैटेगरी में है। So now they get remuneration, now they get commission, plus to them one scheme given, sell more and more ticket, then chance of winning from your ticket is more. ज्यादा बेचोगे तो हो सकता है तुम्हारे टिकट से प्राइस निकल जाए। तो ओरिजिनल विनर उसको तो मिलेगा ही, उस चैनल में जो भी आएगा सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। गॉट इट? तो मान लो उसको 1 करोड़ मिला, तो जो टिकट सेल किया बोला उसको भी 1 लाख रुपया मिलेगा। क्या समझे? विल गिव, so everyone will try to sell more and more tickets, स्कीम टाइप बना दिया। ठीक है? तो what they get now? कमीशन, रेमुनरेशन और प्राइज ऑन लॉटरी टिकट। उसका लॉटरी नहीं निकला है, लॉटरी निकला है किसी और का, लेकिन उसको भी मिलेगा। आई थिंक मीनिंग इज वेरी क्लियर। So this is a scheme. So if total amount exceeds 15,000 rupees in whole year, then TDS is to be deducted. TDS cutting. ठीक है? Again, so 194G. 194H. कमीशन और ब्रोकरेज। ओके, मोर देन रुपीज 15,000, मोर देन रुपीज 15,000। अदर देन PCO, franchises, other than PCO franchises, पब्लिक कॉल ऑफिस है ना, टेलीफोन रास्ता में लेके बैठते हैं ना, वो लोग नहीं, कवर्ड नहीं है, उसको छोड़ के। अदर देन PCO, BSNL का हो, MTNL हो, जो भी हो। ठीक है? और नंबर ऑफ अदर प्राइवेट इंश्योरेंस, मैंने प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स आर देयर, एयरटेल और ये लोग भी बहुत सा है। एनीवे, कमीशन और ब्रोकरेज मोर देन रुपीज 15,000, इसको टेक्निकली समझना है हम लोग को। इंश्योरेंस कमीशन कवर्ड, मतलब पीसीओ वाला को नहीं लगेगा। 1 रुपया 2 रुपया डाल के करता है ना, वो लोग को नहीं लगेगा, उस पर ब्रोकरेज नहीं है। तब अब वो जो लाइन कनेक्शन आया कोई तो दिया, तो देने वाला कौन है? BSNL। वो लोग इन लोग से नहीं काटेगा, दे विल नॉट डिडक्ट। ठीक है? अगेन, तो 194H, ध्यान से, अर्लियर LIC कमीशन ये लोग सब कवर्ड हो जाता था। नाउ वन नेम वाज सहारा इंडिया, इसका भी बहुत एजेंट लोग था। ठीक है? बैंक से
डेली कलेक्शन वाला लोग उसका भी था, तो ये लोग का टीडीएस में कवर्ड नहीं था। सारा इंडिया कलेक्शन करता था डिपॉजिट इंटरेस्ट, कोई ये लोग कवर नहीं था, कोई सेक्शन नहीं था। ओके, so approx you can say 15 years before they realized something going wrong, कुछ लोग escape हो जा रहा है, they introduced that those not covered by any specific section all will be covered by 154 माने 194H, मैंने यह कॉमन बना दिया। कोई भी अगर किसी सेक्शन में कवर्ड नहीं है, कमीशन ब्रोकरेज है, वो इसमें आ जाएगा। अब क्या हो गया, जो रास्ता वाला ब्रोकरेज लोग है, ब्रोकर लोग है, वो लोग भी कवर्ड हो गया इसमें, समझ गए? तो दे वर एस्केप्ड, वो लोग के लिए कोई सेक्शन ही नहीं था। तो नाउ द पर्सन हु इज गिविंग ब्रोकरेज डूइंग ऑल, ठीक है। तो 194H कमीशन ब्रोकरेज मोर देन ₹15,000 दे आर कवर्ड बाई, बस क्या है, ये लोग को रेट जो है 5% में रखा है, बाकी को 10%, ये लोग को 5%, ठीक है। तो 194H, 194I, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट to a resident more than ₹2,40,000, ठीक है। 2 लाख, अगर आप 2,40,000 से ज्यादा रेंट का पेमेंट करते हो, ठीक है ना। बेस्ट एग्जांपल, बैंक ब्रांच अंडर रेंट, दे पे टीडी मैंने रेंट, if their rent is more than 20,000, rent more than 20,000, they have to deduct TDS, रखना पड़ेगा। रेंट अगर 20,000 से ज्यादा, मतलब 2,40,000 से ज्यादा हो गया, they have to deduct TDS। अगर 20,000 या उससे कम है, TDS नहीं काटेगा, अगर ज्यादा है तो TDS काटेगा। क्लियर? इसमें ध्यान रखना है, टैक्स पर TDS नहीं है। मान लो कोई आपको बिल किया, रेंट में GST ऐड करके दिया, क्या किया, रेंट में GST ऐड करके दिया, ठीक है, रेंट में GST ऐड करके दिया, ओके। तो रेंट में GST ऐड करके देने से क्या होगा, रेंट ही लेंगे, GST नहीं लेंगे, उसके बाद उस पर TDS करेंगे, ठीक है। तो टैक्स पर कोई TDS नहीं होगा, क्लियर। लेकिन बिल में अगर GST लिखा हुआ नहीं है तो फिर पूरा पर हो जाएगा, ओके ना। 10% काट, TDS 10% काट लेगा, ठीक है। सो 194I, दिस इज ऑन रेंट। अब यहां पर कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगा। जॉइंट ऑनर, जॉइंट ऑनर बोला टोटल रेंट 3 लाख है, ए बी जॉइंट ऑनर है, इसको 1,50,000, इसको 1,50,000, 2 चेक बना के दे दिया,
टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रीमिसेस 1, मालिक 2, दोनों को आधा आधा। क्लियर? टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो आंसर है, आपको देखना होगा whether you can identify or not, whether you can identify or not। ठीक है? अगर आइडेंटिफाई का मतलब है खाली ए भी आइडेंटिफाई से नहीं होगा, आपका प्रीमिसेस भी सेपरेबल है कि नहीं। प्रीमिसेस नॉट सेपरेबल, जो आपको दिया है वो एक ही है, एक ही गेट है, तो क्या हो गया? एप्लीकेबल। Got it? Answer is applicable. So you are paying to one or more, but if separate agreement, separate defined, ठीक है? ऐसा सोचो, 2 फ्लैट है, उसका बीच से वाल हटा के दोनों को एक कर दिया, 2 का 2 मालिक है, दोनों का 2 मालिक है, पॉसिबल? Agreed to separate agreement. Total rent is more, but identified separate, no TDS। बोला रेंट हम लोग 30,000 रुपया देते हैं महीना का, 3,60,000, लेकिन 15,000 ए को 15,000 बी का, दोनों सेपरेट एग्रीमेंट है, दोनों का एरिया सेपरेट है, पॉसिबल? देन नो टीडीएस। ओके, सो 194I, this is with respect to rent. Now what used rent? What used rent? What used lease? What used lease? What used sublease? जो भी वर्ड यूज करे सब में सेम सेक्शन लगेगा। ओके, 194IA आज के लिए इसी को लास्ट सेक्शन कर देंगे, ठीक है? नाउ पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ any immovable property more than rupees 50 lakhs, more than rupees 50 lakhs, ठीक है? मोर देन रुपीज 50 lakhs, ओके? 50 लाख से ज्यादा, जैसे आप एक मकान परचेस किए 60 लाख का, तो 60 लाख का 1% कितना होता है? 60,000। आप 60,000 टीडीएस काटोगे, बाकी 59,40,000 उसको पेमेंट कर दोगे। क्लियर? You will pay 99%, 1% TDS, 1% TDS. Clear? So 194IA, payment for transfer of any immovable property under section, so more than rupees 50 lakhs under section 194IA. कितना हो गया? 15 सेक्शन हुआ? चलो बहुत है आज के लिए, इससे ज्यादा और ठीक नहीं है।
एक मिनट, टास्क अपडेट